Dear teacher participants, now we are going to start the second session of the second day of our e-learning program. It will be a very interesting subject for you. The subject is National Education Policy 2020, emphasis on art, heritage and cultural education. So it's very relevant and very time scheduled subject on the basis of which our full training session was designed. So here we are presenting before you one of the most eminent expert of CCRT Regional Center Guwahati to deliver the lecture on the topic. He is Dr. Manoj Kumar Nayak. Dr. Manoj Kumar Nayak. He is an assistant professor in the Institute of Distance Learning, Guwahati University, and having more than 13 years of experience in teacher education and higher education. He is primarily involved in the educating purpose of the research fraternity. He has got more than 22 publications in his national and international levels. He has sufficient experience in the school education and so many attended so many seminars, workshops, many matters related to the education policy, the fundamentals of education, Gandhian philosophy, and many more. So now we are going to listen his deliberations on the subject National Education Policy 2020, emphasis on art, heritage, and cultural education. Now I request Dr. Manoj Nayak to take over the session. Thank you. Thank you very much. Thank you, Pujari sir. Very good morning to all the participants, those who are joining this particular training program. And thank you very much, Dr. Sandeep Sharma sir. I heard your lecture in the morning. It was quite interesting, as well as the way you are delivering your lecture is quite significant. However, this particular topic, what is assigned to me is a new education policy 2020 and emphasis on art, heritage and cultural education. So we all aware about the new education policy. Many teachers, they know. Still, this policy, new education policy 2020, in the beginning it was framed in the year 1968. After that, again revised in 1986, National Policy on Education. Then slight modification came in the year 1992. Then after 92, directly in 2020. So it brings certain changes in the field of school education, also higher education. So new education policy 2020, what are the changes? And I will highlight certain objectives of this policy and its emphasis on art education, heritage education, as well as cultural education. So this policy 2020, earlier it was 10+2, 10 साल school education, उसके बाद 2 साल, 2 years, 10+2 years. That has been changed like 5+3+3+4. You can see many documents which is uploaded in the website. So in this 5+3+3+4, what we can do, how we can impact art education, also how we can impact cultural education, how we can preserve our heritage. What are the basic highlights
that was given by the National Policy on Education. We have to see. So past 5 years, this 5 plus 3 plus 3 plus 4, this 5 years is called as the foundation stage. This foundation stage, that means the child must go to the school in the age of 3. बच्चे 3 साल में अभी स्कूल चले जाएंगे, और जिसको हम कहते हैं कि आंगनवाड़ी या प्री स्कूल, जिसमें क्या होता है कि बच्चे पहले घर में खेलते थे, कूदते थे और आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग के साथ चलते थे. बट नाउ दैट विल हैपन इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम. बच्चे वही काम स्कूल में ही करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज और फाउंडेशन स्टेज. दिस फाउंडेशन स्टेज which is multi-level, play activities or activity-based learning must be there in this particular stage. आंगनवाड़ी में बच्चों को एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग और प्ले जितने हो सके. हमारे जैसे पहले हम कहते थे कि बच्चों को भेजते हैं प्ले स्कूल में. मेनी पेरेंट्स यू हैव सीन कि बच्चों को भेजते हैं प्ले स्कूल में और पूछते हैं प्ले स्कूल में क्या सिखाया, 1 2 3 4 सिखाया नहीं, लेकिन हमने भेजे थे उनको प्ले स्कूल में खेलने के लिए, कूदने के लिए. फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा. तो प्रिपरेटरी स्टेज, दिस 5 फाउंडेशन 5 is the stage will start in the age of 3 and it will continue. After that it will come as the preparatory stage 5 plus 3. The second 3, this is called as the preparatory stage, where we can provide only play, discovery and activity based and interactive classroom learning. Activity based learning has given more importance in the National Education Policy 2020. बच्चों को जितने हो सके हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे. इसका फिलोसॉफिकल आउटलुक भी है. इफ वी थिंक अबाउट द फिलॉसफी, प्रैग्मेटिस्टिक फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं प्रयोगवाद, जॉन डुवेज फिलॉसफी, लर्निंग बाय डूइंग. जितने हो सके बच्चों को हम काम देंगे, सिखाएंगे और बच्चे अपने आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, दैट मीन्स प्रैक्टिस विल मेक मैन परफेक्ट. Perfection will come on the basis of practice. That's a pragmatistic philosophy. John Dewey's philosophy has given importance in this particular policy. Then another one is called as the middle stage. Is another 3 years. The third stage, 3 years. This is called as the experimental learning has given more importance. Middle stage में बच्चों को experimental based learning, that means scientific discovery, art, these two have given more importance. Discovery learning or you can say experimental learning. जितने हो सके बच्चे एक्सपेरिमेंट करते जाए. उसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा, आर्ट्स भी रहेगा, सोशल साइंस भी रहेगा और ह्यूमैनिटीज भी रहेगा. And the last one, this is called as the secondary stage, that 4. 5 plus 3 plus 3 plus 4, this 4 comprises of the secondary stage. In that secondary stage, multidisciplinary study, better critical thinking, flexibility and students choice of subject. बच्चों को अपने अपने सब्जेक्ट को चॉइस करके ही पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. These are some of the changes which reflected in न्यू एजुकेशन पॉलिसी. में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ भी आपको हेरिटेज एजुकेशन और कल्चरल एजुकेशन में भी लेके जाए. तो 10+2 के जगह हमारे ये 5 plus 3 plus 3 plus 4 में इसी को कंप्राइज किया. So this policy has certain objectives. These objectives are like, first objective is holistic development. Holistic development means बच्चों का पूर्णांग विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पॉलिसी. इसको एक ऑब्जेक्टिव्स करके हमने लिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी. नंबर 2, दिस पॉलिसी has another one objective which is called as foundation for future learning.
बच्चे पढ़ के आगे क्या करें, बच्चे पढ़ के आगे क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स को ऑलरेडी रखा गया है। कि जैसे कि हम कहते थे आजकल बच्चे पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ाई के खत्म करने के बाद ही कहते हैं अभी क्या होगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, टीचर्स के पास जाते हैं, गाइडेंस की कमी हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि दिस पॉलिसी हैज क्लियरली स्टेटेड सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स लाइक व्हाटएवर द स्टूडेंट विल लर्न in this new education policy system. That means he will prepare himself for future learning and he will establish himself as a citizen of the country or well established man. Number 3, positive self concept. Positive self concept is another one objectives which is given in the new education policy. पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन द सेंस बच्चों में कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट जरूरी हो जाता है। जो भी पढ़ाई करते हैं इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हैज गिवन क्वाइट इंपॉर्टेंस इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी और टेकन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट नंबर 4, दिस इज कॉल्ड एज गुड न्यूट्रिशन। जैसे हमारे मध्याह्न भोजन अभी चलते हैं, बच्चों को हम सिर्फ खिचड़ी खिलाते हैं, स्कूल में जाए नहीं तो घर पेरेंट्स को बुला के कहते हैं भाई अभी बच्चे को खाना वाना तो नहीं मिलेगा, चावल आप लेके चले जाओ। पेरेंट्स भी आके चावल ले जाते हैं, घर में खिला देते हैं बच्चों को और खुद भी खा। तो दिस पॉलिसी हैज गिवन इंपॉर्टेंस इन द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स। दैट मींस इफ यू प्रोवाइड क्वालिटी न्यूट्रिशनल फूड, then only the mental as well as the physical development is possible, because the objectives of new education policy is the holistic development of the child. So how holistic development will come? Holistic development will come when we can provide the students in the good nutrition, or we can provide good nutrition routine or healthy living. If the child is mentally or physically healthy, then only he will incorporate in the learning process. बच्चे तभी पढ़ पाएंगे जब वो mentally और physically fit रहे। Then another one important objectives in new education policy is language and communication skills. Previous section में lecture में डॉक्टर संदीप शर्मा सर ने कह रहे थे आपको लैंग्वेज कितनी भाषा है, कितनी कम्युनिकेशन है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट करने में भी कहीं कहीं ये नहीं कर पा रहे, हमारे तालमेल नहीं हो पा रहे, और somebody is speaking some other languages, another one is speaking another one language. Varieties of languages are there in the country, but how to understand? So language development is quite important in this particular policy, as well as the communication skill, how to develop that particular skill. This policy has given more importance and it is considered as one of the important objectives in new education policy. Then another one important objectives of this policy is development and integration of senses. We have senses, students, they have variety of senses. So how to integrate thinking, speaking, listening, we have many senses in the mind, but how to integrate? कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं। हमारी इंद्रिय, जिसको इंद्रिय हम कहते हैं, इंद्रिय इंटीग्रेशन को जितने हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तब जाके बच्चों में ज्यादातर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। देन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी मस्ट बी देयर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इन दिस पॉलिसी इज नोन एज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। बच्चों को क्यूरियस कर देना है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी to be increased, how the creative thinking will come into the mind. That's why this policy has given more importance on this particular intellectual curiosity. Another one important objectives in a new education policy is called as conceptual understanding. We understand, but how far the concept is understood by the student. ज्यादातर बच्चे पढ़ाई में क्या करते हैं, उसको किताब से मुखस्त कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उसको भूल ही जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग विथ द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इट हैज गिवन इंपॉर्टेंस, और इट हैज गिवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी.
Most significantly, one of the important objectives in new education policy is learning by doing. When we do, then we learn. So what can be done? How we learn? So when we do, learning by doing. This particular policy is totally based on the psychological theories. Learning by doing. आप लोग भी शायद B.Ed जब करेंगे करते हैं तब शायद पढ़ेंगे. Learning by doing theories. तो जब हम कुछ करेंगे तब जाके learning enhance होता जाएगा. So when we learn, when we do something, that means when you do practice, then only we can learn, or we can learn better. Then another one important objective is core human values. Value system has given importance in new education policy. In Indian context, हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारी कल्चर है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, the value system is declining day by day. हमने देखे पुराने जमाने में, जैसे I'll come to the heritage education when we'll talk. The value system is declining day by day. Teacher-student relationship, you will not find the relationship whatever you made with your own teacher. आप अपने टीचर के साथ जैसे रिलेशन में थे, अभी आपके बच्चे शायद आपके साथ वैसे रिलेशनशिप में नहीं है. And now during this pandemic situation also we see everything is online. There is no physical contact between the teacher and the students. तो ये और एक बहुत बड़ी चेंजेस आ रहे हैं. How to deal with the students through online. So thinking with online process, how we can inculcate values among students. In this new education policy, it has given importance, or taking one of the important objectives for development of human values, or we can say development of core human values. Then another one important objectives is orientation and mobility. As much as possible, we have to orient our students and we have to mobilize our students. जितने हो सके ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, सेमिनार, वर्कशॉप हम करेंगे, बच्चों को ओरिएंटेशन देंगे. उसके बाद उनका जो मोबिलिटी है, विचलनशीलता जिसको हम कहते हैं, उनका गति जो है, द स्पेस, द एक्यूरेसी, उसी हिसाब से बच्चों को हम आगे लेने में सक्षम हो पाएंगे. तो दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज स्टेटेड मेनी थिंग्स, बट एज पर द टाइम कंस्ट्रेंट इज कंसर्न्ड, I have to deal with another 3 points: art education, heritage education, and cultural education. So this policy also has a significant impact on heritage education as well as the cultural education. Now, come to the heritage education. Heritage education has given very significant importance by the new education policy. India is a rich country, cultural very rich. We have a sufficient number of heritage and varieties of heritage we have seen. Number one, this is cultural heritage we have. Number two, natural heritage we have. And number three, we have also technological heritage. 3 types of heritage we have seen: cultural heritage, natural heritage, technological heritage. So this heritage education has certain scientific outlook, or you can say silent features. What are the silent features of this heritage education? First silent feature of the heritage education, what is given by the new education policy, is a philosophical and spiritual outlook. When we try to preserve our heritage, we must have a philosophical or spiritual outlook. We have to think about different types of philosophy. We have a philosophy like idealism, like naturalism, like pragmatism, realism, existentialism. So this philosophy has a significant impact on our heritage. Idealism, Gandhi was one of the idealistic philosophers. He has given importance on ideas. He has given importance on ideas. Similarly, when you talk about the naturalistic philosophy or naturalism, Rousseau was one of the naturalistic philosophers. He has given importance on nature. Nature is everything. Gandhi said idea is everything. Rousseau says
nature is everything. Then John Dewey's philosophy came, which is called as pragmatism. You see how the philosophical outlook we have to incorporate in heritage education. First thing is idealistic philosophy. Idea. If you have idea, then you can create many things. गांधी ने कहा आपके पास अगर आइडिया है तो आप संसार को आगे ले पाएंगे और अपने आप को एस्टैब्लिश कर। रूसो ने कहा आइडिया तो ठीक ही है, लेकिन बच्चों को अगर एक परिवेश दिया ना जाए, एक नेचर हम दे नहीं पाएंगे तो वो आइडिया करेगा क्या? आइडिया लेके कोई घर में बैठे तो कुछ काम के लिए नहीं है। आइडिया के साथ आपको नेचर की भी जरूरत होगा, और जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इन द सेंस नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर्स, दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस ऑन nature. That means you have idea. That idea must be applied in the natural way or in the environment. और environment जिसको हम कहते हैं स्कूल, बच्चे स्कूल में आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं स्कूल का एनवायरमेंट, क्लासरूम का एनवायरमेंट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का संपर्क, ये सब एक एनवायरमेंट के साथ होता है। फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल एनवायरमेंट हम दोनों को देखते हैं। उसके बाद अनदर वन फिलोसोफर केम, जॉन दुवे, जे आइडिया और नेचर ये दोनों होने से भी नहीं होगा, साथ साथ आपको प्रैग्मेटिज्म जिसको कहते हैं प्रयोगवाद, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आपके पास आइडिया है, आपके पास एनवायरनमेंट है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो वो ज्ञान आपको मिल नहीं पाएगा। सो दीज थ्री फिलोसफी has a significant impact on the heritage. Idealism, naturalism, as well as pragmatism. Also, realism came, many philosophers, realism, that means if things are very real, then only we can easily realize and इसको वास्तव रूप से हम परिणत कर सकते हैं। Another one silent features of this heritage education, traditional of tolerance. If we cannot tolerate each other, then we cannot understand our culture, our heritage, our art. Moreover, we must have a scientific outlook. If we think about the heritage, if we think about the culture, if we think about our art, then we must have a scientific outlook. That means scientifically we have to see, वैज्ञानिक रूप से उसको देखना है, आर्टिस्टिक रूप से भी देखना है। ये दोनों को कंबाइन करने के बाद ही एक निष्कर्ष वहां से निकल पाएगा और हम उसको प्रिजर्वेशन कर पाएंगे। सो व्हाई दिस पर्टिकुलर heritage education is important, that we have to discuss. Why heritage education is important in school education program, or why National Education Policy has given importance to heritage education as well as the cultural education. Number one importance of heritage education is it helps the students to learn better. If the students will understand about our heritage, cultural heritage, natural heritage, technological heritage, then they can gather lots of experiences and that will help them to learn better. That's why we need our cultural education as well as heritage education. Number two, understand our heritage and values. India is a rich country. We have sufficient number of values, and how to inculcate values, that also we teach in our schools. So when we understand our own heritage, then we can easily inculcate values among students. Number three, bring local heritage to the national heritage. हमारे छोटे छोटे जगह में, छोटे छोटे गांव में भी बहुत सारे लोकल हेरिटेज साइट्स होते हैं। इसको खोज के निकालना और निकाल के उसको नेशनल हेरिटेज साइट पर लाना हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जिसको नेशनल हेरिटेज को हम लोकल हेरिटेज को हम नेशनल हेरिटेज साइट पर लेके आए। नंबर फोर, acquired with culture and past. Why heritage education is important? Because when we study about the heritage education, we must acquire with our own culture. Also, we can
easily acquainted with our past, which is called as our history. History and culture, these two things must be there when we study about the cultural education. Then national integration and international understanding must be there when we study this cultural education or heritage education. So how to provide this heritage education to the students, that we will see. How we can provide. Being a teacher, how you can provide cultural education, or you can say heritage education. First thing is, you must take the students from the local to the world heritage site. Being a teacher, हमारे स्कूल में बहुत सारे टाइम एक्सकर्शन करते हैं, फील्ड टूर करते हैं, बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं. वहाँ क्या होता है कि बच्चों को जब हम हमारी लोकल हेरिटेज साइट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक लेके जा पाएंगे, तब बच्चों में हेरिटेज एजुकेशन के प्रति और आग्रह होगा. Students must be more interested about our own heritage education. Then one more point, some of the compositeness of this heritage education. What are the heritage education we have seen? One of the best example is our गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. आप शायद रामायण या महाभारत में देखे होंगे, हमारी जिसको हम कहते हैं गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुरु शिष्य परंपरा, 1 गुरु 4-5 शिष्य, आज जिसको हम कहते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोजिटनेस ऑफ आवर हेरिटेज एजुकेशन. आजकल भी धीरे धीरे वो शुरू होने वाला है. योगा क्लासेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आपका मॉडर्नाइज वे में आपका. अनदर वन थिंग, दिस इज गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. एंड नंबर 2, मोनास्ट्री. आजकल ज्यादातर आप अरुणाचल साइड में आएंगे, कहीं आएंगे तो मोनास्ट्री आप जाएंगे. देयर आल्सो यू कैन सी द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, very integral, very cooperative, very caring, and very sharing. Monastery is also one of the important examples of our heritage education. चाइना में आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कभी आएंगे तो अरुणाचल में भी, तवांग में भी number of monasteries are there, and the other parts of the country also monasteries are there. You can see in that particular monastery the way the student and teacher they deal with themselves, the exact relationship between the teacher and student will come to our mind. Then maktabs are there, madrasas are there, upper madrasas, lower madrasas. These are also the compositeness of our heritage site. In some states we can say some पाठशालाs are there, जहाँ पाठ्य वितरण किया जाता है, जहाँ पढ़ाई किया जाता है, जिसको पाठशाला भी हम कहते हैं. बहुत सारे संस्कृत टूल भी है, संस्कृत टूल कहते हैं, वो भी हमारी कल्चर और हेरिटेज को जुड़ के रखते हैं. नॉर्थ ईस्ट में आप भी देखेंगे, असम में भी देखेंगे, यहाँ सत्रज है, जिसको हम कहते हैं छत्रज, यहाँ सत्र कहते हैं. मठ है, मंदिर है, नामघर है, ये सब हमारी हेरिटेज साइट है. हेरिटेज एजुकेशन के साथ ये जुड़े हैं, जहाँ टीचर स्टूडेंट के बीच में इतने निबिड़ संपर्क होते हैं. और वही हेरिटेज एजुकेशन को हम अभी स्कूल में भी लाने वाले हैं, और ये हमारे पुराने स्कूल में थे. बीच में ये कहीं हमारा धीरे धीरे इसको टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप थोड़ा अलग हुआ. उसके बाद अभी फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसी चीज को हमारे स्कूल में लाने के लिए कोशिश कर. सो हाउ दिस हेरिटेज एजुकेशन टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू एजुकेशन. शिक्षा के जरिए ये कैसे
हम ट्रांसमिट कर पाएंगे हेरिटेज एजुकेशन. Being a teacher, what we can do? Being a teacher, we must tell our students about the great men, great rishis, Muni rishis, their contribution in the field of education. ऋषि मुनि ऋषि हमारे जितने देश में पुराने थे, उनके कितने कितने कंट्रीब्यूशंस है. नालंदा हो, तक्षशिला हो, या हमारे गुरुकुल सिस्टम में हो, गुरु द्रोणाचार्य की बात करें, गुरु कृपाचार्य की बात करें, उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, that must be exercised in school education program. Then only we can transmit our heritage education to the next generation. Then another one, achievement of contribution of various indigenous schools of the past that I told right now. Indigenous schools, Nalanda, Takshila, ये सब की कंट्रीब्यूशन क्या है और अचीवमेंट्स, ये कितने अच्छे थे, कितने स्टूडेंट यहाँ बाहर से आके पढ़ते थे, आज भी फॉरेन से स्टूडेंट आके हमारे देश में पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट भी फॉरेन जाके पढ़ते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रति उनकी जो आग्रह है, जो इच्छा है, जो इंडियन कल्चर को स्टडी करना है, जो इंडियन हेरिटेज साइट को देखना है, इसको लेकर हमें सबको गौरवान्वित होना चाहिए. इसीलिए what are the achievements made by the indigenous schools in the past, that must be exercised in the school education program. Or being a teacher, you must highlight in your class, so that the students must know about the contribution of these particular schools. Then works of ancient rishis and saints, पुराने ऋषि महर्षि जितने से, उनके कर्म, उनके काम कितने हैं और उनका इम्पैक्ट आज भी कैसे चल रहा है. The way they have treated, the way they have implemented the value education system in the present day context, that must be highlighted in our school education program. Then only the students can easily understand, or we can transmit this heritage education easily. Another one thing, life of work of various teachers. Teachers means गुरु का हो या आपका कहे मौलवी का हो, इन लोगों के जितने सारे important work they have done in the past, that must be highlighted. Also interpretation of myths, legends and literature. हमारे लिटरेचर को जितने हो सके हम इंटरप्रेट करते जाएंगे, लेजेंड्स को हम इंटरप्रेट करते जाएंगे. Moreover, we have certain customs, traditions and festivals of various ethnic groups, various religions and linguistic groups of the country. ये सब को जितने हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, तब क्या होगा, हमारी ये हेरिटेज एजुकेशन को हम धीरे धीरे आगे ले पाएंगे. So what suggestions I want to give in this context? Being a teacher, we must organize excursions in the schools, field tours. Then only the students will be acquainted with our heritage, also acquainted with our own culture. Then we can take our students or visit of museums or archaeological sites. बच्चों को म्यूजियम्स में और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में भी हमें लेके जाना है. उनको हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी ऐतिह्य, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जितने हैं, पुराने कल्चर्स को, वो सबको दिखाना है. तब जाके हम ये हेरिटेज एजुकेशन को आगे ले पाएंगे. Also, being a teacher, we can organize essay competitions on literature, because this new education policy has given importance on language and communication skills. So linking to that, when we start this, when we organize such type of programs, is called as essay competition, we can
provide certain intellectual thoughts so that students can easily write essays on different literatures, on different languages. Also, being a teacher, we can provide small research project to our students when they come to class 9 and 10 or 11 and 12. Small research project, that means the pragmatistic philosophy, what John Dewey said, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं. हम टीचर लोग उसको आजकल बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है, मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है, साइकिल लेके भाग जाता है कंप्यूटर सेंटर में. मम्मी पापा पूछने से कहता है नहीं नहीं मुझे प्रोजेक्ट दिया है टीचर ने, सो आई वांट टू बी बिजी विथ माय प्रोजेक्ट. सो दिस प्रोजेक्ट मेथड इज डेवलप्ड बाय जॉन ड्यूई's philosophy. But this project method is not new. It is very old. हम भी हमारे जमाने में प्रोजेक्ट करते थे और हमारे टीचर भी हमें प्रोजेक्ट देते थे. शायद आज के जमाने में जैसे प्रोजेक्ट था, पुराने जमाने में वैसे प्रोजेक्ट हमारा था ही नहीं. हमें हमारे टीचर ने क्या देते थे, एक डस्टर बना के लाओ, एक झाड़ू बना के लाओ, एक पिलो कवर बना के लाओ, एक रुमाल बना के लाओ, एक मिट्टी का क्ले बना के लाओ. These were small projects given by our teachers in the past. But nowadays, with the advancement of science and technology, the technological aspect is increasing. That's why we teachers are providing number of projects so that students can easily conduct their project in the schools, or they can easily gain their knowledge through internet or YouTubes. Similarly, being a teacher, what we can do? We can also conduct exhibitions in our schools. Exhibitions on art, on our heritage, on our culture. Different types of exhibition if we conduct, then only the students can easily understand about their own culture, own heritage. Moreover, establishment of heritage club, debate and craft campaign. Being a teacher, we can also establish heritage club, or we can organize certain debates on this heritage education. Then only students can easily understand. Also, printing and drawing competition must be organized in the schools. बच्चों के बीच में प्रिंटिंग का हो, पेंटिंग का हो, प्रिंटिंग का हो और ड्राइंग का हो, ये सब की कंपटीशन हम करते रहेंगे, तब जाकर हमारी आर्ट एजुकेशन, हेरिटेज एजुकेशन, उसको हम धीरे धीरे आगे ले पाएंगे. One more suggestion is we can organize certain workshops with the artist. When you talk about the art education, we have certain local artist nearby. हमारे स्कूल के पास, हमारे लोकल एरिया में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं. हम उनको हमारे स्कूल में बुला के भी कुछ वर्कशॉप कर सकते हैं, जहां से हमारे बच्चों को कुछ सीख मिल सके, तब हम ही आर्ट एजुकेशन को और भी आगे ले पाए. One more suggestion again, we must tell our students to collect traditional receipts, stamps, and also trace them for family history. हमारे जो फैमिली हिस्ट्री है, बच्चों को हम सिखाएंगे कितने पुराने, कितने हिस्ट्री तक हम जा सकते हैं. उसके साथ हम जब जुड़ जाएंगे, तब हम हिस्ट्री के साथ जुड़ जाएंगे, हमारे कल्चर के साथ जुड़ जाएंगे और हमारी हेरिटेज को भी हम बचा पाएंगे. So, due to the time constraint, again I have to take another one part. This is called as cultural education, and here I will show certain slides also. I will request my experts. So cultural education, this is all about the heritage education. Now we can go for the cultural education. What we can understand by our culture.
अच्छा, what do you think about culture? Culture, it includes ideas, traditions, beliefs, folkways, mores, ethics, morals, manners, customs, traditions, religions, etc. That means culture includes everything. Culture includes everything. What it includes? It includes ideas. It includes our traditions. It includes our beliefs, folkways. Impact of culture and education. That means when you talk about this culture, education and society, these three are interrelated. Without culture, education is not possible. Even without education, we cannot transmit our culture from one generation to another one generation. So this culture has given certain importance, impact on the followings. How it has given certain impact? First thing is our aims of education. Our aims of education is determined by our culture. Ultimate aims, also proximate aims. So in school education program, we can see few aims are proximate and few aims are ultimate. कुछ टेम्पररी होते हैं और कुछ परमानेंटली होते हैं. So जो aims of education है, many philosophers, they have suggested their aims of education in different ways. Idealistic philosophers, their aims of education, naturalistic philosophers, pragmatism philosophy, realism philosophy, ये जितने philosophical philosophers है, सबकी aims है holistic development. जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है उसको कहते हैं holistic development. So all the philosophers, they have suggested, they have highlighted the aims of education must be all-round development of the child. हम बहुत पहले से ही पढ़ के आए हैं, education is nothing but it's all-round development of the child. All-round development हम बहुत पुराने जमाने से पढ़ते आ रहे हैं और बच्चों को सिखाते आ रहे हैं. But in practical sense, how far it is possible? That's why in this new education policy, the policy clearly states that if the aims of education will not be changed, then holistic development or all-round development cannot be possible. That's why our own culture will determine the aims of education. Similarly, looking towards the aims of education, we have to frame our own curriculum. जो पाठ्यक्रम हमारे जो है उसको हम उसी हिसाब से लेके जाएंगे. जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 में था, अभी 5+3+3+4 आ गए. तो करिकुलम हैज आल्सो बीन चेंज्ड. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मस्ट बी देयर. अभी बच्चे आफ्टर मैट्रिकुलेशन दे कैन चूज एनी सब्जेक्ट. साइंस के साथ वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकता है. एनी सब्जेक्ट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम must be there. So looking towards the aims of education and curriculum, the methods of teaching has also been changed. Now you see, पहले जमाने में हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग में थे, देन फेस टू फेस मोड में थे. अभी हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग अलग हो चुका है, ऑनलाइन मोड पर आ चुका है. तो थ्रू ऑनलाइन मोड हाउ वी कैन इनकलकेट एजुकेशन. तो अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसके साथ हमें ऑनलाइन मोड पर जाना है. साथ ही साथ डिसिप्लिन, हाउ टू मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन among the students, that is also quite important and it has an impact of culture and education. Last thing is teaching materials and multimedia approaches. We have to improve our teaching materials and multimedia approaches. जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पहले ही कहा है
कि खेल कूद में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा ज्यादातर, जब बच्चे आंगनवाड़ी से शुरू करेंगे अपनी स्कूल करियर को इन द एज ऑफ 3. Accordingly, the teaching material must be changed and we have to take the help of the new multimedia approaches. Let me show another one slide. Now, how impact of education on culture? Inheritance of culture, these are some of the points you see. Then conservation of cultural values, enrichment of culture, transmission of culture to the coming generation, then change of culture to the highest advantage of men, diffusion of culture for unity of humanity. That means if culture has an impact on education, similarly education must have impact on culture. But this culture has a great significance on students' personality. जैसे कि हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में 1952 and 53, the Secondary Education Commission has clearly stated 4 major objectives. Number 1, development of citizenship, development of vocational efficiency, development of personality, and development of leadership. But when the child will come to the school, when you talk about the all-round development or holistic development, then personality will come. So culture and personality, these two are interrelated. So how culture and personality are interrelated? Now see, there are certain environmental characteristics that will affect the personality of the child. If the environment of the child is conducive, then definitely the child must grow a better personality. Also, second thing is social structure. जहाँ बच्चे रहते हैं, समाज, man is a social human being. The social structure must be clear, must be social structure that must be satisfied to the mind of the child. If the structure is not good, the society is not good, then it affects the personality of the child. That's why for developing the personality linking to the culture, we must create a better society. Then link with culture. When we try to develop the personality of the child, then we must link with our own culture, because culture has a significant impact on students' personality or child's personality. हमारी जो कल्चर है वो हमारे बच्चों के ऊपर असर करता है, इसीलिए बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहिए और हम पेरेंट्स हो या टीचर्स हो जितने हैं, हम उनको बच्चों को धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ाते जाएंगे और सिखाते जाएंगे. Another one thing, culture consists of values. Value system must be there, and we learn number of values from culture. Then cultural context pertaining to the habits and attitudes. Good habits must be there in the mind of the students. If the students are doing certain wrong habits, then being a teacher, being a parent, we try to modify, we try to bring or modify the bad habits and help them to accept the good habits. Also, this from this culture, we try to develop a positive attitude among the mind of the students. एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम बच्चों से ये कर पाएंगे तब हम आगे ले पाएंगे. नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग सोशियो कल्चरल चेंज. हाउ द कल्चरल चेंजेस विल कम. नंबर 1, it helps in removing the
evils that exist in the society like early marriage, child labor, dowry system, traditional beliefs. Because we can change the society, cultural, we can bring certain changes in our society or in the cultural society with the help of education. These are some of the things we have to bring early changes. What are these? Early marriage that must be stopped. Child labor must be stopped. Dowry system must be eradicated from the society. And certain traditional beliefs. हमारी पुरानी परंपरा के विश्वास, अंधविश्वास हम जिसको कहते हैं, ये सबको धीरे धीरे हम चेंज कर पाएंगे ओनली थ्रू एजुकेशन. नंबर 2, it helps to change the traditional attitude and outlook of people towards women and marriage system of the society. हमारे लोगों में थोड़ा ट्रेडिशनल एटीट्यूड भी है और आउटलुक भी है. इसके प्रति समाज में हमारे जितने वुमेन है और मैरिज सिस्टम पर भी है, वो सबको हमें चेंज करना है थ्रू एजुकेशन. ऑल्सो इट पेव्स द वे फॉर ब्रिंगिंग एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री. Number 4, education enables the youth of the society to invest their learning for economic efficiency. Again, it is the means which makes people aware of different socio-economic as well as the political issues. It widens people's vision towards life. You can see, I can share this particular PPT also. It is the agent which fosters the sense and feelings of equalization in society. It teaches people to tolerate and give respect to the individuality and culture of others. Also, it enables people to visualize life from a more scientific perspectives. That means education has a significant role for bringing certain socio-cultural changes. Apart from this, when you talk about, when we give certain vision for this cultural education, looking towards the new pollution education, how we can provide this cultural education in the schools. Now, when the child come to the school and when it crosses the age of 6, in that time, the teacher should activate the child to participate in different cultural activities. हमारी जो activities है 6 के बाद और 7 के बाद बच्चों को हम धीरे धीरे activate करवाएंगे. We teachers try to activate the child to participate in different types of cultural activities. For example, reading books, storytelling, art and craft, singing, music, ये सब में बच्चों को धीरे धीरे हम लेके जाए. One more thing we can provide, we can help the students to visit the venues. हम बच्चों को venues, बहुत सारे venues में लेके जा सकते हैं, जैसे कि थिएटर्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, कंसर्ट हॉल हो, म्यूजियम हो, गैलरी हो, लाइब्रेरी हो और एनी हेरिटेज साइट. हम टीचर लोग बच्चों को उसी जगह पर लेके जाएंगे जहां बच्चे हमारी ओन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को धीरे धीरे सीख पाए. When the child will come to the upper primary stage or in the age of 11 years, then how being a teacher we can provide or how we can help our students. Here, the teacher must provide certain knowledge about cultural education. 11 साल में मतलब क्लास 6 जब आ जाते हैं, teacher must provide
knowledge about cultural education. Also, the teacher should provide a chance to create, to design, to devise, or to compose their own work in collaboration with their classmates. जिसको ये pragmatistic classmates कहता है, peer learning हम जिसको कहते हैं. We teachers, that means we teachers must provide a chance to the students. We must create a chance. We must create an environment so that they can design, they can devise, also they can compose. Three things. That means critical thinking will start in that particular stage. If you go to the Bloom's taxonomy of educational objectives, B.S. Bloom has already highlighted in that stage. इसी स्टेज पर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे आ जाते हैं और वहां बच्चों को हम टीचर लोग एक क्रिएट करने देंगे, चांस देंगे. नंबर 3, being a teacher, again we try to provide certain experiences to write a story or write a poem or write a play. शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे, फिर बच्चों को धीरे धीरे उनको एक्सपीरियंस के आगे लेके जाएंगे. उनका एक्सपीरियंस कैसे होगा, when they will write certain stories, जब वो कुछ स्टोरी लिखेंगे या पोएम या प्ले, ये सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बच्चों में हम लेके जाएंगे. One more thing, they try to present, or you can say presenting, displaying and performing to a range of audience. बच्चों को धीरे धीरे हम प्रेजेंट करवाएंगे. When you talk about this cultural education, शिक्षक होने के नाते बच्चों को हम प्रेजेंट करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे और परफॉर्म भी करने देंगे. कहाँ करने देंगे ना, with a range of audience. Also, learning about the application of technology to help them to access our culture. Application of technology. This is one of the important point we have to see. अभी बच्चे बचपन से ही मोबाइल के साथ अटैच्ड हो चुके हैं, इंटरनेट के साथ जुड़ चुके हैं, यूट्यूब के साथ जुड़ चुके हैं. तो in that context, we must try to change the learning process, and this learning, that means application of technology, ICT. Application of ICT is quite essential, and if possible in our schools, in the rural schools, we try to implement the internet program, internet connection, so that we can reach to each and every student at any time. That means accessibility must be there, flexibility must be there, then only students can learn better. In addition to this, when the child will come to the secondary stage, how we can impact cultural education? Now, when the child will come to the secondary stage, we try to encourage the child to explore literature, films, visual art, craft, heritage, music, and dance. In the secondary stage, we try to encourage the child. That means we try to encourage our students so that they can easily explore their literature, their films, their visual arts, their craft, their heritage. Moreover, in this particular secondary stage, we try to provide knowledge about historical development of these art form. Historical development.
That means the teacher must create a chance to the musical instrument. Also, the students must regularly take part in singing, then dramatic performances, take part in workshop with professional artists, craftsmen, architects, musicians, dancers, etc. During this secondary stage, being a teacher, we have to provide this type of activities to our students so that we can easily enhance our cultural education among students. Also, in this secondary stage, visit different cultural institutions. We take our students to different types of cultural institutions. When we take our students to this particular institution, that means the students will gather certain experiences. When the students will gather experiences, learning will be more fruitful. We must encourage the students to read books at the time of leisure time. अवसर विनोदन में बच्चों को जितने हो सके हम किताब पढ़ने के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे. बच्चों को और एक हैबिट डेवलप करने के लिए हम सिखाएंगे जिसको कहते हैं यूज ऑफ लाइब्रेरी. पहले था लाइब्रेरी, आजकल हो गया इंटरनेट. आजकल बच्चे कुछ भी चीज चाहिए तो इंटरनेट से ले सकते हैं. इट्स नॉट बैड. दैट मीन्स सर्चिंग ए थिंग, सर्चिंग आवर लिटरेचर, सर्चिंग आवर हिस्ट्री, सर्चिंग आवर कल्चर must be a good sign among the students. Also, we must try to encourage to use digital library. Just now I said digital library को access करने में भी बच्चे आगे आएंगे. Then writing, acting, shooting, editing of a short film. During this particular secondary stage, we teachers must encourage our students to write a story, try to act, try to shoot a film, try to edit. These are some of the activities if we organize in our schools, if we encourage our students at the time of secondary education, then we can easily inculcate cultural education or easily we can enhance cultural education in schools. Finally, higher education. In higher education, what we can do? The study cultural education subjects. जब बच्चे हायर एजुकेशन में आ जाएंगे, उनको हम कल्चरल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ने देंगे. Let them study cultural education as a subject. Secondly, actively participate in cultural activities. बच्चों को हम actively participate करने देंगे in different types of cultural activities. And third thing, regular visit to museum, heritage site. In higher education stage, regular visit to museum and heritage site. And number 4, attend professional concerts and plays. बच्चों को धीरे धीरे हम अटेंड करने देंगे. ये जितने हैं आर्ट कल्चर, ये सब उनका एक्सपीरियंस के तौर से लिया जाएगा. बच्चों को जितने हम एक्सपीरियंस दे पाएंगे उतने तक ही बच्चे और आगे बढ़ पाएंगे. So these are some of the important aspects that I have highlighted in this particular lecture, and I think now let's have a discussion.
he has described all the aspect through the presentation and with his descriptions. And sir, you have taken all cultural components one by one, the performing art, then tangible aspect, intangible aspect of our Indian culture. And you told us about the methodologies also, how to inculcate in classroom teaching, even to paintings and to practices, how can they practice in their school, even you described to us. It was excellent learning, wonderful presentation, sir, there is no doubt. And now we are coming to the interactive session, and Sir Manoj has welcomed us teachers to have queries and questions with Dr. Manoj regarding to NEP. Really is a new thing to us, certain components and related to culture. We can learn from Dr. Manoj. We can have one discussion session. आप सभी का स्वागत है. Please, आप लोग Dr. Manoj से बातें करें. So I was telling about protecting our monuments, and by taking the children to the excursions, we can inculcate the respect among the student community about our historical monuments and all. But one thing what I observed, like recently we conducted a painting professional artist camp at our school. It was really wonderful, and everybody really enjoyed it. So the students also seemed really admiring the work of the artist. But very unfortunately, the very next day, most of the paintings were found spoiled. They soiled by just spraying some colors and all. And the artist came from Puducherry. They built a very beautiful 10-foot giraffe with plaster Paris, which was also destroyed by the students. It was very unfortunate, like how to handle this kind of destruction mentality of the students when we are trying to teach them some respect about our art and culture. There are certain students who are enjoying it while destroying such beautiful things. How to handle this kind of thing? This is more about the psychology of the students. I'd like to know if there is a solution. This, sir, it's a very nice question. That means you are asking the mental aspect of the students. Exactly. That means the way, being a teacher, you took your students to that exhibition. Yes, sir. But finally, the students, they destroy everything. Yes, sir. That means it is related to the mental health of the child. That means there must be a frustration in the mind of the child. There must be a negative thinking in the mind of the child. That's why they have created. First thing, being a teacher, we have to find out the cause, why it happens. Okay. First thing, we have to find out the causes, why it happens. That means it is related to the indisciplined behavior of the individual. Indisciplined behavior. This indisciplined behavior, where the students they learn. First thing, the students they learn this particular indisciplined behavior from their home. Number one, if the home is in a conflicting environment, the students will bring that mental ill health to your exhibition. Number two, in some other aspects, school is another one important area. If the school environment is not good, if the teacher-student relationship is not good, then the child will conduct such type of indisciplined behavior or destroy everything. Third thing, another important aspect is the media. Whatever the students they learn from the media, that means destruction, everything. Where they learn from the media. That means either the child is mentally ill health, the child has a negative attitude in the mind. So being a teacher, we try to develop a positive attitude, and as much as possible, we have to give self-discipline. In the new education policy, it has clearly stated
discipline is most important in all the philosophical. If you go to the idealistic philosophy, naturalism philosophy, pragmatism philosophy, self-discipline is one of the aims of education. I showed you one of the slide, aims of how culture impact on education. That means aims of education. The aims of education is determined by the philosophy, and all philosophers, they have given a clear-cut vision that self-discipline is quite important. When the child is not self-disciplined, when the child will come to such type of exhibition, certain frustrations will come, and then the child will create such type of situation. So being a teacher, we try to understand the child psychology and try to improve the mental health of this child. Then for the next time, it cannot be held. These are the days where students, most of the time, they have to depend on the online surfing the information. Like Right. we have to provide a smartphone to them, and most of the times we don't know what they're doing. Either they're doing their project work or they're misguided and doing browsing some unwanted sites. Right. Can't we really, the government, from the government side, can't we really restrict like all those unwanted stuff in the internet? Because every time we can't monitor them, it will be very embarrassing also, spying on the children, students, every time. We don't know, like most of the time they are spending with the mobile. Every time they say like we are doing some project work, we are seeing some information. We can't monitor them every time. No? Can't Right. we have more reliable firewalls, like so that those unwanted sites should be totally banned? Like, can't we do that from government side? So Because then, every time we are saying it is injurious to health, doing this, doing that, smoking and alcohol. But when they're available, why should they be made available? Such websites are made available. That is a reason. Like once we start restricting those sites, this problem can be avoided, because this kind of habit will create a lot of change in their mental condition and make them really ruthless at times. Hope I understood. You understood my point. yeah, it depends upon the government. That means unwanted elements must be erased from the internet. Your Right. question. And government must take certain initiatives. So see, it depends upon the government. Yes. If government wishes, then it is possible. Yes. It can be eradicated. Yeah. We Because know. there is a lot of stress from such higher level people like you. Should really make a request to the government, like not a common man. Since you're concentrating to improve the education system of the entire country, this could be one of the major reasons why the students getting distracted because of these things. Maybe the higher officials like you should take the initiative, sir. Okay, sir. Let's see. Let's see. Let's see. Dr. Manoj, I wish to add something on this question actually. Yes, 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 sir. Sir Momedi, if you see, even Google has been classified, all the media in mobile has been classified for children and adults, right? Yes, yes, sir. Yes, sir. If in case of my children, they are using mobile, there is children Google. Yes, And sir. Yes, sir. that has been connected with my email. If my Yes. son download any of thing materials in his mobile, Okay. that message come through, and with my prior permission only he can download. Yes. I understand. Right. So that's What you said is government 100% attempts, correct. government attempts and ethics are there, but we have to face some of the global pressure definitely, right? Yeah. We Yes. can't keep our family from globalization and that vibes coming to us, but government attempts are there. Yes. But your question is very genuine, and we can make more attempts to make it very clear and filter the data. Yes, we are Thank you agree so with much. you, sir. Thank you so Thank much. you. Next, anyone may please Yes. ask the question. Okay, sir. I wanted to ask something which I think is a very major issue, and that is
lack of etiquette and lack of manners in students, because they end at the end of the day they turn out to be the adult. So why in our school education this thing called basic etiquettes, manners, how to behave, how to talk, it's not there, because they become adults and they learn that they don't know that how, where to throw garbage and where not, how to respect the elders, how to follow rules even while buying tickets or while standing in a queue, or even while using mobile. I mean, Indians are notorious for not following basic etiquettes and basic manners. If in school education this thing is installed in their mind at a very early age, then they can become uh, mm, rule-abiding citizens and good citizens of India. And I mean, in other countries, they seem to be very rule-abiding and very supporting and very good humans. But when we talk of Indians following rules, then we lack so much. So how this basic etiquette things in students can be installed from the very beginning? Okay, very nice question, sir. This question is related to value-based education. That means this question arises right now when we became teachers. But when we were students, how we deal with our teachers? A different chapter. Sir, your question is how we can start it in the initial stage in our school. So before the child coming to the school, he learns at home. So family values is quite important, and this indisciplined activities, whatever the child is coming to the school and started doing such type of things, that means first thing is the family is responsible. If the parents are not taking proper care during the initial stage, then the child will take that indisciplined activities in the school. The way you ask, बच्चे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये स्कूल से. और यहाँ another one important thing is sometimes it depends upon our school environment. Sometimes it depends upon the peer impact of peers. Impact of peers, peer learning. एक दूसरे से देख के सीखते हैं. इसमें हमारे parental role as well as a teacher's role, both are quite important to make the students more and more disciplined. और initial stage के बारे में आप जो कह रहे हैं, you are asking how initially we can start. All schools they have initially started such type of practices, but gradually बच्चे जब स्कूल आते हैं पूरा सीधा आराम से गुड बॉय गुड गर्ल होके आ जाते हैं. धीरे धीरे क्या होता है कि उनको जब एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना पड़ता है, वो जानते हैं इसी एनवायरनमेंट में ऐसे मैं कर सकता हूँ, तब जाके बच्चे उसी एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाते हैं. So इसीलिए पेरेंट्स एटीट्यूड एज वेल एज टीचर्स एटीट्यूड, a positive attitude must be developed in the mind, and then only appropriate value education can be inculcated in the mind of the child. Sir, you have told us that we should give the activity-based education to our students, but the marking system of our education system is only depends on the written exams only, not about the practices, practical exams and logics and activities. Then how can we only give students the activity based? We have to tell them how learn them and cram them. These type of things are very in related, मतलब दोनों में रिलेशन नहीं हो पा रहा. तो ये समझ में नहीं आता कि कभी कभार कि हम लोगों को उनको बोलना पड़ता है कि आप लोग ये सब चीजें याद भी करिए, रटिए भी, क्योंकि ना हर चीज प्रैक्टिकल बेस्ड तरीके से नहीं समझाई जा सकती, और एग्जाम्स भी क्या होते हैं पूरा इस चीज से रिलेट नहीं हो पाते हैं. तो मैडम गलती तो हमारा वही है, हम सिर्फ बच्चों को एग्जामिनेशन के साथ ही तुलना करते हैं.
अभी पैंडेमिक सिचुएशन में तो एग्जामिनेशन ही बहुत सारे स्टेट ने बंद कर दिए, तब बच्चे के आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी जो सोच विचार है, हम सोचते हैं कि बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन देने से ही मतलब उनको 99 मिल गया, 90 मिल गया, बस बच्चे अच्छे हो गए। बट आई सेड इन सेकेंडरी एजुकेशन अगर आप पढ़ेंगे 1952-53 में, उसमें कहीं जगह पर लिखा नहीं है कि व्हाट परसेंटेज द चाइल्ड विल रिसीव इन द स्कूल कैरियर। हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। ये सिर्फ एक मीडियम है कि हाँ बच्चे कितने आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे 90% रखा, कोई बच्चे 70%, 70% रखने वाला बच्चा खराब थोड़ी है ना। कोई बच्चा खराब नहीं है, कोई बच्चा ये नहीं है। मार्क्स के ऊपर हमें बच्चों को कभी भी ये नहीं कर पाएंगे कि ये बच्चा इतना नंबर रखा है। जैसे कि पहले और एक सर ने बोल रहे थे कि वैल्यू एजुकेशन नहीं है, मार्क्स तो ज्यादा है लेकिन बच्चे का अंदर में अगर वैल्यू सिस्टम नहीं है तो वो पढ़ाई में क्या होगा। तो inculcation of values, our duty is to create a good citizen of the country. बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना है, जो सेकेंडरी एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। बच्चे का व्यक्तित्व का विकास करना है, अनदर वन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स है। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, बच्चा पढ़ के करेगा क्या, वोकेशन में क्या लेगा, वोकेशनल एफिशिएंसी उसको बनाना है। ठीक है, ये सब है हमारी ऑब्जेक्टिव। लेकिन हम उसको कैसे तुलना करते हैं, नंबर्स के बारे में, इतना नंबर लेके रखा है। और बच्चे जब ज्यादा नंबर भी रखते हैं, अगर वोकेशनल एफिशिएंसी कुछ नहीं है, तब जाके फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में हो, ये और डेंजर हो जाते हैं हमारे लिए। 99 मिला है एग्जामिनेशन में, एग्जाम दिया 99 मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, 99 को लेके सर्टिफिकेट लेके घर में बैठ के अभी डिप्रेशन का टैबलेट खा, तो क्या होगा। तो फुलेस्ट डेवलपमेंट कहाँ हुआ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो उसी के ही बारे में कहा गया कि फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। नॉट nowhere it is mentioned that the student must get such marks, such grades, then only we can range the child from first grade, second grade. Skill based education, choice based education is important nowadays. ठीक है मैम, thank you for questions. Thank you, sir. Yes. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, उत्तम। अच्छा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। Your lecture was good. बस बहुत ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर्नाटक से बोल रहे हैं। ओके सर, धन्यवादಗಳು। थैंक्स सर, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा आपसे। जी, लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग मैडम मानसी। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं मानसी दास बोल रही थी गुवाहाटी से। गुवाहाटी, यस मैडम। एक बात है, हम हेरिटेज एजुकेशन के साथ में हमने साइलेंट फीचर्स में हमने बोला ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस। एक बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक एस्पेक्ट है जहाँ पे हम चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इन जनरल सोसाइटी में जो आजकल मॉब लिंचिंग से लेके सब चीज के साथ में ये टॉलरेंस जो चीज के साथ में जुड़ा हुआ है, दैट इज। और एक बात था, हम लोग पढ़ते थे जो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, राइट। हाँ, ये चीज को हम लोग खुद हम लोग टीचर्स किस तरह उसको आगे बढ़ा सके, मतलब उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसमें यदि कारगर ना हो तो हम लोग बच्चों के अंदर में वो चीज को सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो वही टॉलरेंस के साथ में आपका जैसे क्लासरूम में रिएक्शंस बहुत आ जाते हैं, रिस्पॉन्स कम हो जाता है, तो कुछ जो हम लोग सोचे पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है हमारी करने के लिए। तो इसको हम लोग किस तरह से, मतलब हम खुद टीचर्स किस तरह से इसको अपने आप को इस पर एक्सपर्टाइज थोड़ा कर सके, उसके ऊपर में भी सर कुछ मतलब हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना टॉलरेंस के साथ में, सही में टॉलरेंस हम लोग मतलब इन जनरल बहुत कम ही हो रहा है उनमें से, सहिष्णुता कम है। हाँ, इसमें बहुत सारे कारण हो जाते हैं जब हम इंटरलेट हो जाते हैं। और सर, और एक चीज, और साथ में एक चीज ऐड करने चाहते थे, जी। आगे जो सर ने बताया था जो बिहेवियर स्कूल में, एक बात है सर, हम लोग जैसे हम लोग के टाइम पे तो वैल्यू एजुकेशन था, मगर उसका कोई किताब नहीं था या कहीं मेंशन नहीं था। नहीं था। टीचर्स ने हमें
हाँ नहीं था, मैं टीचर्स ने हमें उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा या कुछ काम करते करते हम लोग के अंदर में वो इनकलकेट हो गया है। जी साथ में हम लोग जैसे अधिकारों के अधिकार के बारे में जितना बातें करते हैं, हम कर्तव्य के बारे में उतना बातें नहीं करते। इसलिए Right. कर्तव्य यदि हम लोग का पहले छोटे से ही हम लोग के अंदर में इंस्टिल किया जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, ड्यूटीज क्या है पहले, तो उसके हिसाब से यदि कर्तव्य को लेके आएंगे तो साथ में ये भी इनकलकेट धीरे धीरे हो जाना चाहिए। नहीं तो आप देखिए स्कूल को भी वो अपना नहीं सोचते, मतलब और जैसे बोले ना सर, मतलब कहीं पौंडीचेरी में पुडुचेरी में हुआ घटना, वो सर हम लोग के साथ में भी होता है कहीं जाए, दैट इज मतलब उनके अंदर वो चीज है ही नहीं जो ये अपना है। ये स्कूल के डेस्क पे थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो वही बोला, हम लोग बिहेवियर में हम लोग में ही कुछ कमी है, जो चीज हम लोग इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों में, जो चीज ये जनरेशन उभर के आ रहा है। थैंक यू सर, यही बात था Thank you, बोलने thank के you, लिए, thank you, टॉलरेंस thank you, के बारे में। thank you for your kind suggestions. Nice to talk to you all. It was quite good and very interactive and very informative lecture. I hope all the participants have consumed it for their future. Yeah. Sandeep, बोलिए कुछ. सर बिल्कुल बिल्कुल, सब एक्सेप्टेंस काफी अच्छा था। क्वेरीज अभी भी लोगों के हाथ खड़े हैं कि हमें पूछना है, जानना है। मींस डॉक्टर मनोज हैज इग्नाइटेड ऑल ब्रेन्स थ्रू द एनईपी एंड हिज डिस्कशन। अब हम लास्ट प्रोग्राम की तरफ चलें सर। रिचुअल वोट ऑफ थैंक्स आपकी ओर से आ जाए, और ये 1:30 का समय हमारा हो गया एज पर प्रोग्राम शेड्यूल। वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ, और कल को फिर हम स्वागत करेंगे आज के कंप्लीशन के साथ। ओवर टू यू पुजारी सर। Okay, thank you very much. Well, dear participants, our respected expert, Dr. Manoj Nayak, we are just concluding today's second session, where Dr. Nayak had delivered a very interesting and informative lecture. So for today's all proceedings, I thank all the teacher participants, our experts, our CCRT officials in headquarters and as well as in Guwahati office also, for conducting this session, today's program very successfully. And I do apologize to the teacher participants because we are in a problem to extend a few minutes of the program also, because you were very much inquisitive to know something from Manoj Nayak. But I am telling you that in Guwahati, that where Dr. Nayak is sitting now, he has to move fast to his residence, because from 2 p.m. a curfew will be imposed again. So sorry for your inconvenience, and we could not give you more. Anyway, thanks everybody, and tomorrow we will have very nice and interactive and informative sessions, and interesting subject, quite it is on environment and Hindustani music. So hope everybody will appear in the screen well before time, and we will manage the session as usual. Thanks to all again. Thanks to Sandeep Sharma ji, and thanks to Manoj Nayak. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir.